Good morning, everyone. This is Basudev Pinda. Welcome to other class, rather fundamental classes. Vacation चली बिले. So vacation actually कौन पाई हुए हैं? Vacation रे आमे आमर जो जिन्स माने आमे क्लास रे ताकू टैकल करी पारुने सही क्लास गुडी को स्पेशली किंबा जहाँ टास्क हमर बढ़ी जाइए सही टास्क गुडी को पाई हमको वैकेशन मिलता है नहीं ना कि सेलिब्रेट करने कल्चरल एथनिसिटीज रे टाइम स्पेंड करने हमको वैकेशन मिलता है। तो आज आम ए क्लास रे इन दिस स्पेशल क्लास इट विल बी 1 आवर गोटे घंटा भितर इंग्लिश रो किसी फंडामेंटल जिनस पढ़ा विल स्टडी फंडामेंटल थिंग्स जो छुआ मैंने अच्छा से मुझे रिक्वेस्ट करी कि क्लास टाक शेयर करदे फ्रेंड मान सहित जहाँफल पिला जॉइन करेंगे पिला जापर जे क्लासेस आर दे। तो फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर क्लास हूँ फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर स्पेशली नहीं नहीं दिस इज फंडामेंटल बेटर सोनाली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर इंग्राजी व्याकरण रो फंडामेंटल जिनस विषय आज पढ़ा आउ एटा 1 आवर क्लास आउ सेकेंड ईयर पिला मानकर पाई क्लास राति रे करवा। तो फंडामेंटल कहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाई शुड वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर हमें कहीं की आवश्यकता अच्छे व्हाई शुड वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर नहीं। सो द क्वेश्चन जब उठे मन रे प्रश्न उठे मु व्याकरण कौन पाई पढ़ी कौन सी एक भाषा को शुद्ध भाव में लिखा भाषा को जानापी भल मार्क पाइबापी यू कैन से आमको भाषार व्याकरण जानापी पड़ो वी मस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज द ग्रामर ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो प्रथम जमती आम समस्त जाचे गोटे भाषा रे अक्षर थाए लेटर्स आर देयर देन वर्ड्स आर देयर sentences are there, clauses are there, phrases are there, sentences are there. तो यही सब जिनस नित्य रूपा ओके नाइस टू सी यू। तो कौन हुए यही सब जिनस को जो आम जाना ना शब्दर व्यवहार जो आम जाना ना शब्द को जो आम चिन्ह पारिबा ना when we are unable to identify the words and we don't know the use of words at that time we are lacking English grammar ताहले आम पाखे इंग्राजी बा कौन सी भी व्याकरण अभाव अच्छी बोली कह कौन जिते बड़े आम पाखे भाषा रे थिबा शब्द गुड़िकर व्यवहार आम जानी न था। ओके सो इन दिस स्पेशल सेशन वैकेशन सेशन यू कैन से आम आज पढ़ा द पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच जो सब शब्द अच्छी इंग्राजी जेतेक शब्द अच्छे व्हाट एवर वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश एंड हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड एंड व्हाट आर देयर क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन कौन से व्यवहार कौन ता संबंधित नियम सब कौन अच्छी से विषय रे आमे आज ए क्लास रे जानिबा। ओके तो जमती मु लिखी ऑलरेडी आई हैव रिटन द वर्ड्स or the structural words in English grammar. They are divided into 8 different groups. 8टी भाग रे विभक्त व्याकरण रे जेतिकी शब्द व्याकरण तो कहबानी आमे इंग्राजी रो समस्त शब्द को 8टा विभागीकरण करा जायछि 8टा भाग रे विभक्त करा जायछि। आउ किछि बही रे इवन इफ 9 लिखाइछि 10 लिखाइछि 11 भी अच्छी 12 भी अच्छी अप टू 13 पर्यंत अच्छी। बट इफ वी विल लुक इनटू आवर इंग्लिश बुक इन्विटेशन 4 and whatever books are being taught in especially our states in Odisha, maximum grammar books have these 8 type of words or 8 type of part of speech. So what are those 8 type of part of speech? तो इंग्राजी शब्द गुड़िक आम जो जेतिक व्याकरण पढ़ुचे आम अंचल आम लोकालिटी हिसाब से ताको आम 8टा
मुख्य भाग रे विभक्त करिछे से आठटा होची नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन आज ट्राए करी मु एमानकर क्लासिफिकेशन ए जो गुड़िका अच्छी एमानकर डेफिनेशन आउ क्लासिफिकेशन विषय ए क्लास रे 1 आवर क्लास रे सारिबा पई आउ आसंता काली क्लास रे आमे एमानकर यूज व्यवहार सब पढ़िबा आउ नेक्स्ट जो रहिला लास्ट डे आमर संडे से दिन आमे जानिबा टेंस देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड वॉइस चेंज एतिकी एई 3 दिन भितर आई थिंक सो आमर फंडामेंटल जिनस क्लियर हो जो तक कॉम्पिटिटिव परीक्षा पे दरकार कॉम्पिटिटिव परीक्षा पे तुम सिटी बीएड तुम जहाँ कौच से जिनस जो तक ग्रामर दरकार से तक ग्रामर आज आम आज आम आरंभ करवा 3 दिन भर सारे पे ओके तो पे प्रथम जिनस फर्स्ट वर्ड इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड नाउन नाउन तापर आइला प्रोनाउन अच्छा एगुड़िकर ओडिया अर्थ जदि तुम जान इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज नाउन नाउन कहले आम कहूँ विशेष्य नाउन रो ओडिया हूँ विशेष्य प्रोनाउन कहले सर्वनाम एडजेक्टिव कहले विशेषण वर्ब कहले क्रिया देन एडवर्ब कहले क्रिया विशेषण कंजंक्शन कहले संयोजक अव्यय देन प्रीपोजिशन कहले नॉर्मली अव्यय पद देन इंटरजेक्शन कहले भी अव्यय सो दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स डिड यू गेट माय पॉइंट अच्छा पिला वर्तमान जीवा नाउन पाखक है मु वर्तमान ए क्लासिफिकेशन जो लिखी या मु लिभे दउछि वर्तमान जीवा में क्लासिफिकेशन पाखक नाउन नाउन विषय जानिबा नाउन नाउन अच्छा पिले नाउन नाउन द डेफिनेशन ऑफ नाउन देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ा जाए नाउन आर नेमिंग वर्ड्स आउ किसी स्कूल बही रे लिखा हुए नाउन इज ए नेम आउ किसी बही रे लिखा हुए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल्स वर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा एबले सो सिंपली नाउन कहिले आमे जदि सीधा सीधा बुझिबा नाउन इज नथिंग बट इट डिनोट्स ए नेम व्हाट इज इट noun is nothing but it denotes a name or words that denotes a name are noun simple तो जेकोसी एक ना सेटा माने आमे देखि पारू न पारू छुई पारू न पारू जेकोसी ना जदि ना दिया है कोनोसी जिंस कोनोसी मनुष्य कोनोसी फीलिंग इमोशन एटसेट्रा दैट इज ए नाउन अच्छा नाउन एज ए नेम मोटा मोटी भाव कहला नाउन होची गोटे ना नाउन हूँ कौन गोटे ना तो ये नाउन शब्दर उत्पत्ति नाउन शब्दटा कौ शब्द रु आसी इंग्लिश रे नहीं सो देयर इज ए वर्ड कॉल्ड नोमेन नोमेन मन रखिबा नोमेन यही शब्दटा नोमेन शब्द रु आसी नोमेन NOMEN नोमेन शब्द इंग्राजी रो प्रत्येक शब्द व्हाट एवर वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश they have their evolution stories सबु शब्द इंग्राजी रो सबु शब्दर गोटे गोटे गल्प शब्द पछरे गोटे गोटे इतिहास अच्छे जदि आम रूट जो आमर डिक्शनरी अच्छी रूट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश रूट्स आम जीवा आम देखा जे सबु शब्दर गोटे गोटे इतिहास अच्छी आउ ए नोमेन शब्दर अर्थ होची नेम नोमेन शब्दर अर्थ कौन पिले नेम ठीक अच्छे तो नेम जेहेतु नोमेन शब्दर अर्थ नेम नोमेन सो दैट्स व्हाई नाउन स्टैंड फॉर नेम मोटा मोटी भाव कहवा गले अच्छा तो ये नाउनटा इंग्राजी रे केते भाग रे विभक्त कमेंट करके कहि पारिबो मु देखुची समस्त हमर कमेंट दिस नाउन्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स केते प्रकार नाउनटा केते भाग रे विभक्त केते प्रकार नाउन अछि इंग्राजी रे मते के कहि परिबो इफ एनीबॉडी कैन कमेंट मी ओके नोबडी इज कमेंटिंग सो दिस नाउन ओके 5 जोहन नाइस सो दिस नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स ना ओके तो पहले अकॉर्डिंग टू देयर यूज अकॉर्डिंग टू
the classification, standard classification of English. According to the standard classification of English, noun are divided into two different categories. Nearly 6. Okay. So the standard classification of noun or the modern classification noun tells us that noun are divided into two types. Let me explain. Then after watching that, you will tell me. So nouns are of two types. Look, first one, yeah, noun. These are of two different types. Remember, what are those two different types? ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ସେୟାର କରିବା, ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆମ କଲେଜର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସେୟାର କର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି abstract noun, abstract then concrete. ঠিক ଅଛି, କ'ଣ noun divide into two type. nounଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି abstract abstract then ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି concrete। ମନେ ରହିଲା, abstract ଆଉ concrete। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସାର୍ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ନାଉନଟା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର। ୟୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ନୁହଁ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। and how much book you'll study, it depends upon how much book you have studied. So let's see abstract and concrete. A abstract noun kaile, abstract nouns is a noun, abstract noun is a noun that you cannot see, that you cannot touch. जो noun को तमे छुई पारिब नाही, एभली एक ना जो ना को तमे देखि पारिब नाही, जहा को तमे छुई पारिब नाही, that is your abstract noun। मन रखिबा, मु यार उदाहरण भी आगु को देबी पिले तुमको। तापरे एपडा आइला कंक्रीट नाउन। ताहले abstract रो ऑपोजिट होउची कंक्रीट नाउन। कोन? यस, abstract नाउन रो ऑपोजिट होउची कंक्रीट नाउन। ताहले जेमती abstract नाउन कहले हम जेमती जानिले जे abstract नाउन इज a noun that we cannot see, that we cannot touch, ताको हमें देखि परिबा नाही किंबा छुई परिबा नाही। से भलिया कंक्रीट नाउन कोन है दिबो? तो कंक्रीट नाउन होची से नाउन जाको हमें देखि परिबा, छुई परिबा। So concrete nouns are those nouns that we can see, we can touch. एटा कोन? That we cannot see, that we cannot touch। मन रहिला। तो वर्तमान दिवा उदाहरण आउ थरे। यही कंक्रीट नाउनटा पुणी थरे चारि भागरे विभक्त। मन रखिबा, कंक्रीट नाउनटा केते भागरे विभक्त पिला? कंक्रीट नाउनटा चारि भागरे विभक्त। कोन? प्रथम हैला प्रॉपर नाउन, तापरे हैला कॉमन नाउन, तापरे हैला कलेक्टिव नाउन, तापरे हैला मटेरियल नाउन। मन रहिला कोन? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तापरे हैला मटेरियल नाउन। ये केते भागरे विभक्त? ये होचंती चारि भागरे विभक्त। तो कौन कहा जाए? ये चारि प्लस ये एक या मिसई देले 5 भाग। बट आउ गोटे जिनस पढ़ा जाए ना कल माने स्कूल मानकरे जे एई जो रहिला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एटा भी 3 भाग रे विभक्त। दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। कौन? फर्स्ट वन इज yes, action, state and feeling। मन रखिबा पिले, एक्शन, स्टेट एंड फीलिंग। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी 3 भाग रे विभक्त। तो आमे यार क्लासिफिकेशन विषय जानिले पिले। कौन जानिले? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, देन एटा होची एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एतिक विषय आम जानिले। वर्तमान जानिले आम क्लासिफिकेशन केवल जानिले। बुझिगला? कौन जानिले? जे नाउनटा होची 2 भाग रे विभक्त,
गोटे abstract noun और गोटे concrete noun. Abstract noun are those noun that we cannot see, we cannot touch. Concrete noun is a noun that we can see, we can touch. तापरे concrete noun तुम चारि भाग रे विभक्त. Proper noun, common noun, collective noun और material noun. से भलिया तुम abstract noun तीन भाग रे विभक्त. कौन कौन action, state and feeling. बुझीगला. तो एतिकी जानिला परे वर्तमान आमे चिवा पिले ए जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन विषय सम्यक सम्यक जानिबा. टिके टिके जानिबा. प्रॉपर नाउन इज ए स्पेशल नेम. कारण मते बहुत सारा कोर्स कवर करिवार अछि तो मु टिके स्पीड जीवी. हम खाली नोट करि जीवा. तो प्रॉपर नाउन कोन? प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम. पर्टिकुलर नेम जेमती मो ना होची वासुदेव पंडा. सो वासुदेव पंडा is a particular person and his name is Vasudev Panda. So Vasudev Panda is what? It is a proper noun. So some students are there. Golden Das. Golden Das is also a proper noun. Sonali is also a proper noun. Getting me? तो यही बढ़िया. तापरे पिले कौन? इट आला कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कहले कौन? कॉमन नाउन कहले जेमती हमें बॉय बॉय कहले हमें सब पिला मन को बॉय बोली कहूँ. गर्ल गर्ल कहले आम टोटल माने झील मान समस्त गर्ल बोली कहूँ. टीचर टीचर कहले आम सब टीचर माने समस्त ऑल द टीचर. वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचर कम्युनिटी. गेटिंग मी? सो एगुड़ा कौन? कॉमन नेम जोटा समस्त कॉमन आकार कह जाए सेटा कहले आम टोटल कैटेगरी बुझू सेटा हूँ कॉमन नेम. तब रहा कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन कहले कौन पिले? कलेक्टिव नाउन कहले जो गोटे ग्रुप रो ना दबा, गोटे कलेक्शन रो ना दबा, गोटे मास आकार गोटे किसी जिनस गैदरिंग गोटे ना दबा. बुझी कि ना नहीं? सी कौन हम? दैट इज योर यस दैट इज योर कलेक्टिव नाउन. जेमती फॉर एग्जांपल आम कहवा गोटे जगह बहुत लोक जमा होती देखो आम कौन कहवा? क्राउड बोली कहे. तो क्राउडटा कौन पुणी? क्राउडटा हूँ गोटे कलेक्टिव नाउन. से भाया माने गोटे रूम भितर बहुत सारा पिला बसिक पढ़ुंट आम कौन कहे? क्लास कहे. यस. सो क्लास इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन. सॉरी क्लास इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन. से भाया बहुत सारा तुम महुमाछी देखुच. महुमाछी उड़ीकी जाऊँ सब बजिंग साउंड करें से आम कौन कहे? स्वार्म. SWARM स्वार्म. तो स्वार्म ऑफ बीज तो सेटा कौन हम? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? कलेक्टिव नाउन. से भाया तुम देखी फुल तोड़ा फुल तोड़ा जहाँ आम दौचे बके बोली कहूँ नहीं बके. दैट इज व्हाट? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बके. देन बनाना डजन ऑफ बनाना. देन प्राइड ऑफ लायन. सो दीज वर्ड्स आर देन फ्लीट ऑफ शिप सॉरी. सो स्कूल ऑफ फिश. दीज आर व्हाट? दीज आर कलेक्टिव नाउन. जो कौन एक दल को गोटे ना दि जाऊँगी आम कहे कलेक्टिव नाउन. से भाया मटेरियल नाउन आइला. अच्छा मटेरियल नाउन ताहले कौन? व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन कहले पिले जेमिति मु तुमको गोटे कहूँ देख यहाँ गोटे माने डस्टर आम समस्त जानते डस्टर. यहाँ कौन? द डस्टर इज मेड ऑफ प्लास्टिक. व्हाट? डस्टर इज मेड ऑफ प्लास्टिक. तो यहाँ कौथरू तैयारी? प्लास्टिक रु तैयारी. ताले तार बेस मटेरियल कौन? प्लास्टिक. ताले प्लास्टिकटा और डस्टर. डस्टरटा को नाउन और प्लास्टिकटा को नाउन किए कहि परिबो मते? डस्टरटा होची कॉमन नाउन एंड दिस प्लास्टिक इज योर मटेरियल नाउन. ओके लेट मी गो अनदर एग्जांपल. सो what is it? This is a what? This is a bucket. This is a bucket. And when is the biggest when? What when and what big when? What? So what is it then? Look, this is a packet. This packet is made of what? Who can tell me? This packet is also made of a plastic. So you know what happens? Packet. The packet is what? It is a common noun. And the plastic. Plastic is what? Plastic is made of yeah. This plastic is material noun. You're correct. So let us go. Another example. This is what? This is a piece of chalk. This is a piece of chalk. And this piece of chalk
This piece of chalk is made up of what? It is calcium carbonate. Getting me? Calcium carbonate. So the calcium carbonate, that is a material noun, and this chalk is your common noun. So these are the example you can say. Now abstract noun. What is an abstract noun? Abstract nouns are noun, as I've already told you. Abstract nouns are nouns that's a we cannot see, we cannot touch. For example, knowledge is power. Look at this two, example. Knowledge is power. Knowledge and power. These two words. So knowledge and what? Power. You can't say whatever knowledge I have. I can't say whatever knowledge you possess. Yes or no? तुम पाखे केते ज्ञान अच्छी मु जानी मो पाखे कौन अच्छी तुम जान दैट वी कैनॉट सी देन लाइक दैट पावर शक्ति किए देखी कहार शक्ति केते किए केते कौन करि पारे. Yes or no? But still, look, I have used the word knowledge in place of subject, and I have used the word power in place of complement. And we know that we use normally in place of subject and complement, normally a noun is being used. The complement jagare এবং subject jagare or object jagare. I mean normally we use a pronoun, we use a noun, we use a noun phrase, we use a noun clause, we use an infinitive clause. So here these are not noun phrase, or it can be a noun phrase, but this is not an infinitive phrase. So these two words are normally noun. And which type of noun these are? एमाने को प्रकार नाउन पिले ए दुटा नाउन होचंती abstract noun. Another example आमे जो देखिबा. So honesty is the best policy. What? Honesty is the best policy. Getting me? Look, honesty and policy. Honesty and policy. These two words, honesty, sadhuta, policy, jujun. So, plan. These two words are noun. Can you see whether I am honest or not? Whether there is honesty inside me or not? You can't. Yes or no? So, this honesty and this policy, whatever plan I have, you can't see. Whatever plan you have, I can't see. These two words are what? Yes, abstract noun. Clear? Now, let us go to, another part, that is your pronoun. Pronoun. So, pronouns, as you know, pronoun. Pronoun. What is a pronoun? Let me tell you, what is a pronoun? A pronoun is a word, remember, or write down. A pronoun is a word that we use instead of and in place of noun. Clear? So, a pronoun is a word that we use instead of and in place of noun. Pronoun होची सही शब्द जो शब्द गुड़िक और जो वर्ड गुड़िक कौन हुए नाउन रो जगह नाउन रो बदल रे व्यवहार होता है. क्लियर? कौन? नाउन रो बदल रे नाउन रो जगह व्यवहृत होथुवा शब्द गुड़ी को आमे कौन कही था? प्रोनाउन बोली कही था. प्रोनाउन रो अर्थ कौन? सर्वनाम. नाम बदल रे सबु नाम बदल रे जहाँ व्यवहार हुए सेटा होची सर्वनाम. मन रखिबा. अच्छा, तो यही प्रोनाउन गुड़ी पिले इंग्लिश रे नॉर्मली आमे 8 प्रकार प्रोनाउन बोली कही था. मैक्सिमम ग्रामर बुक रे भी लिखा अछि जे देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रोनाउंस इन इंग्लिश. कौन? 8 टाइप ऑफ प्रोनाउंस. व्हाट आर दोज 8 टाइप? यही 8 प्रकार प्रोनाउन को मन रखिबा पई गोटे छोटिया ट्रिक मन रखिबा पिले. कौन कौन? डबल पी, डबल आर, डबल डी, then double I. Remember this. So P double, R double, D double, I double.
So if you want to remember this with a trick, you can apply this. What are those? Double P, double R, double D, and double I. So let me write now. What are these? P stand for, R stand for, D stand for, and I stand for. Clear? So what happens now? Look, this P stand for personal. 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 Then another P. This P stand for possessive. Possessive. Then this R stand for relative. Then this R stand for reflexive. Then D stand for demonstrative. D stand for distributive. Then I stand for interrogative. Then this I stand for indefinite. Clear? So what happens? Look at this. Double P, double R, double D, double I. First P stand for personal, personal. Then second P stand for possessive, possessive. Then R stand for relative, relative. Then R stand for reflexive, reflexive. Then D stand for demonstrative, demonstrative. Then D stand for distributive, distributive. Then I stand for interrogative, interrogative. Then last one is indefinite, indefinite. Okay, so these are the 8 type of pronouns. पिले मुझे मन करो definition कोई दो ची, गोटे दुईटा example कोई दो ची, हमें बुझीबा note करना बा. Personal. पिले personal कोई देखो ना, what is personal? As I told you in class, मु class रे तो मन को कोई ची पिला मने. इटी कौन हुए? Personal कोई ले the noun that we use for person. The pronoun that we use for person. तो लोकमानंक पाए व्यक्तिमानंक पाए व्यवहृत होथवा प्रोनाउन गुडी को पर्सनल प्रोनाउन बोली कहा जाए. कौन कहा जाए? व्यक्तिमानंक व्यक्ति विशेष मानंक बदल रे व्यवहृत होथवा प्रोनाउन मानंक को पर्सनल प्रोनाउन बोली कहा जाए. मन रहिला जेमिति फॉर एग्जांपल राजेश इज ए बॉय. Rajesh is a boy. Look at this. Rajesh is a boy. Now I'll write he studies in class 11. Class 11th. So he studies in class 11th. So here what happens then? This he, I have used this he for Rajesh, and Rajesh is a person. So what happens? This he is a personal pronoun because I am using that particular he for a particular person. So this is what? Personal pronoun. Now, if you ask me, sir, how many personal pronouns are there, or which pronouns are used for person? The question is, को pronoun सबु पर्सन मानंक पाई व्यक्ति मानंक पाई व्यवहृत हे थामते जीवा देखिबा एटी कोन हुए बिले जेमती तमे समस्त टेंस चार्ट बही रे देखिथिबो. यू माइट हैव सीन इट. ही I, we, she, he, you, they. Okay, I, we, she, he, you, and they. Normally, these pronouns comes under the category of personal pronoun. What are these? I, we, she, he, you, and they. These are comes under personal pronoun. Now you can ask me another question, sir, which is impersonal pronoun then? Normally it stand for it. It
इट इज योर इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो यही सब प्रोनाउन जो रहा आई वी सी ही यू दे एमाने सब आम पर्सन मान व्यवहार करटा या इम्पर्सनल प्रोनाउन कह जाए। बाकी जो ऑब्जेक्ट रहा जो जिनस सब रहा इनानिमेट जिनस सब रहा से व्यवहार कौटा इटा बुझेगा। तो बर्तमान पे जीवा आम पर्सनल प्रोनाउन विषय जानिले। ये पर्सनल प्रोनाउन को दी भाग रे विभक्त कराई। पर्सनल प्रोनाउन को दुई भाग रे विभक्त कराई। गेटिंग मी? सो दिस पर्सनल pronouns are divided into two types. पर्सनल प्रोनाउन दुई भाग रे विभक्त कौन कौन? फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। रिमेंबर दिस, रिमेंबर। सो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन टा दुई भाग रे विभक्त। गोटे होउची सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आउ गोटे होउची ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा एटी तमे याकू देखले ही जानी पड़ुथबो पिले सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहले कोन। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होची सेही प्रोनाउन जहा को हमें सब्जेक्ट जगह रे व्यवहार करूचे। सब्जेक्ट बदल रे सब्जेक्ट जगह रे व्यवहार करूचे। जेमति मो टिके आगरु तुमको एग्जांपल देइथिले बुझियला। तो व्हेन वी यूज द पर्सनल प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट दैट इज पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड व्हेन वी यूज द पर्सनल प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह रे व्यवहार करबा ताकू कहबा हमें ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। बुझियला कोन? आउ थरे मु कहू बिले जेतले पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट जगह रे व्यवहार करबा सेटा होची पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन और जेतेबेले पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट जगह रे व्यवहार करबा सेटा होची पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल he gave me a book. He gave me a book. Look at this. Now here he is also a pronoun and me is also a pronoun. He is also a pronoun and me is also a pronoun. Now what happens? This he, I have used this he in place of subject and I have used this me in place of object because I have used after the verb gave. Gave टा होची verb और gave पर मो कोटा व्यवहार करछि पिले मी टा व्यवहार करिछि। ताहेले एटी कोन हला पिले ए मी टा होची तमरा ऑब्जेक्ट हिसाब रे जेतु एटा होची ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और ही टा सब्जेक्ट जगह रे मो व्यवहार करछि एटा होची सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। वर्तमान देखिबा किछि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव रे ऑब्जेक्टिव कोन कोन हुए? सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म गोटे ही प्रोनाउन तार दुईटा फॉर्म थाए। गोटे होची सब्जेक्ट फॉर्म और गोटे होची ऑब्जेक्ट फॉर्म। बुझियला जेतेबेले भर पर लगौचे सेतेबेले सेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म रे व्यवहार हुए और ताको ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहा जाए। जेतेबेले भर पूर्वर लगौचे सेटा सब्जेक्ट फॉर्म रे व्यवहार हुए और ताको सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बोली कहा जाए। वर्तमान उदाहरण स्वरूप आम देखिया पिले एटी आमर ही टा होची सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन यार ऑब्जेक्टिव पर्सनल होची हिम। से बलिया आई टा होची सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन यार एपटा होची मी। तापरे एठी कोन छी? तापरे हम जिबा देटा कोन? देर होची देम। तो ये होची ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये होची सब्जेक्टिव। से बलिया एठी हला उई एपट लिखिबा हम कोन? अस। एपटे लिखले आम यू यू ही रहे मन रखा पिले सेकेंड पर्सन सब यू ही रहिबो। यार कौन सी माने निर्दिष्ट फॉर्म माने सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म नाही गोटे ही फॉर्म अछि तार। जेतेबेले ऑब्जेक्ट पार्ट रे व्यवहार होबो सेटा ताको ऑब्जेक्टिव कहबा और जेतेबेले सब्जेक्ट पार्ट रे व्यवहार होबो ताको कोन कहबा? सब्जेक्टिव बोली कहबा। मन रहला। अच्छा तो ये थिला पर्सनल प्रोनाउन पिला। वर्तमान आमे जिबा कौन कौटी की जीवा आमे?
এইটি দেখ আমি বর্তমান যা পজেসিভ পাক পিলে পজেসিভ 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 कहले कौन रखिले पजेसिव कहले ओनरशिप मालिकाना सत्व मन रखा पजेशन पजेशन शब्द रु पज ये जो पजेसिव शब्द आई कौ शब्द रु पजेशन POSSESSION पजेशन तो पजेशन शब्द रु ये पजेसिव शब्दटा आसी तो पजेशन कहले नॉर्मली ओनरशिप जमती तुम व्यवहार कर माई फोन माई बाइक माई कार योर कॉलेज हर पर्स ये आम व्यवहार करुचे ये जो रहा ये माई हिज हर ये सब रहा एमाने को तुम लगुथ एमाने पजेसिव प्रोनाउन बोलिकी एमाने पजेसिव प्रोनाउन नुहंते बुझेगा तो ये कौन रहा सब बेले मन रखा जिते बेले एस लगी कौन नॉर्मली एस लगी जमती देख गोटे छाड़ीदे बाकी सब जगह एस लगे पजेसिव एडजेक्टिव रे जब आम एस ऐड करदे सिंपल व्हेन वी ऐड एस विथ पजेसिव एडजेक्टिव इट बिकम ए पजेसिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल द बुक इज माइन टिके पिले कंसंट्रेट करवा गोटे छोटिया एठी गोटे ट्विस्ट अच्छी मुझे तुमको देखा द बुक इज माइन लुक एट दिस एठी माइन कहले कौन पिले मोर आम जानी माइन कहले मोर आम समस्त जानीचे जानीचे ना नहीं जानीचे तो ये आउ एटा को मु कौन करटा इजटा हूँ वर्ब तुम जानी ऑक्सिलरी वर्ब इजटा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब आउ द बुकटा हूँ सब्जेक्ट तो यहाँ स्ट्रक्चर ला सब्जेक्ट देन वर्ब देन कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर अच्छी तो एटी पिला कौन ये माइंडटा हूँ कॉम्प्लीमेंट तो ये कॉम्प्लीमेंटा गोटे प्रोनाउन आउ एटा हूँ तुम पजेसिव प्रोनाउन कहीं प्रश्न गोटे कहीं सार कहीं नहीं प्रश्न न पचारे क्लास भल लगे तो ये जेहेतु मु कौन कहूँ द बुक इज माइन बहीटा मोर मोर मुझे से बहीर मालिक हूँ मु बुझे ना से बहीर मालिक हूँ मु बहीटा मोर तो ये पोजिशन सुझाऊँ सो ये माइंडटा हूँ कौन पिले ये माइंडटा है तुम पजेसिव प्रोनाउन बुझीगला आ गोटे एग्जांपल दूसरी एनादर एग्जांपल बर्तमान देखा से ट्विस्टा जो कहली से ट्विस्टा ये कौन मुझे सेम जिनस को दिस इज माई बुक दिस इज माई बुक लुक एट दिस ये कौन है बोले दिसटा कौन इजटा कौन माईटा कौन बुकटा कौन बुकटा आम नाउन कहले जानले नहीं इजटा कहले ऑक्सिलरी वर्ब कहले आम जानले दिसटा भी आम सब्जेक्ट कहले जानले ठीक अच्छे बर्तमान एनीबडी कैन टेल मी किए पिला मते कहब माईटा कौन अंशुमान सब्जेक्ट ये माईटा कौन व्हाट इज दिस माई स्टैंड फॉर ये माईटा कौन व्यवहार को कौ प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ ये माईटा व्हिच टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यू कैन टेल मी इफ एनीबडी कैन टेल मी आम क्लास रे पढ़ीचे पिले क्लास रे पढ़ीचे कॉलेज रे आम पढ़ी सारी आमर पिला जो मैंने अच्छो आम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास एनीबडी कैन टेल मी Adjective Shubham Kumar Dixit very good yes good God bless you beta so this my is adjective ये माईटा हूँ देवी प्रसाद ना बेटा ना 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 एटा ऑब्जेक्ट हम ना ये ऑब्जेक्ट हम ना यहाँ हूँ adjective कहीं की why this is an adjective look at this because this my describe or is used for a noun or this is a preceded word of the noun phrase a noun phrase pre-determiner or pre-modifiers तम कही पारिबो ताको नहीं and a pre-modifiers or pre-determiner normally considered as an adjective all the pre-determiners or pre-modifiers are normally considered as adjective so this is my which type of adjective Dixit, can you tell me which type of adjective this is?
If you can comment quickly, which type of adjective is my? Anybody can? This is your, yeah, black agent. Yeah, it is an adjective, but which type of adjective? Who can tell me which type of adjective? Possessive adjective. Very good. Yes. Yes. This is a possessive adjective. Possessive. एठी मालिकाना सत्व सुझाउथबा विशेषण बा possessive adjective बोली आमे ताकू कहिबा. Now anybody can tell me this pronoun, which type of pronoun? Okay, आमे पढी न वर्तमान अभी उपचारजी ए this टा गोटे pronoun. एटा को type of pronoun? If anybody can tell me, this is which type of pronoun? If anybody can tell, yeah, this is look. This is chalk. This is duster. This is Google's case. Yeah, this is words. So what happens now? Okay, anybody can tell me this is which type of pronoun? This टा को प्रकार pronoun के कहि परिबो? This, it is a demonstrative pronoun. Yes, Subham, very good. Yes, this is a demonstrative pronoun. The pronoun that we use, Premchandra Rana. Good, nice. So when we use the pronoun that we use to demonstrate anything, any person, any object, that is called your demonstrative pronoun. Okay, पढ़िबा आगु पढ़िबा. तो ये थिला पिले कोन possessive pronoun. तो possessive pronoun सब कोन कोन म लिखि दउची. possessive pronoun सब हला जेमथि कोन mine I रो होची mine. ठीक अछि. से बला दे रो होची theirs THEIRS. तापर we हेले हमर होची ours. you हेले your होची YOURS. he रोची his. तापर she रोची horse. S. So look at what is there. ये माइंड को छाड़ी दे की बाकी सब रे S सब यारे S लागुची. मन रहा पिले. तो ये सब होचंती कोन? ये सब होचंती possessive pronoun. बुझला? ये सब हेले पर्सनल pronoun. ये सब हेले possessive pronoun. वर्तमान पिला जीवा relative pronoun पाखकू. हाँ, relative. अच्छा, relative pronoun टा कौन पिले? relative तुम समझते clause विषय सुनी थी वो. You might have got. You are in +2 first year, +2 second year, even +3 first year पिला भी अच्छी. So तुम समझते निश्चित भावे clause विषय जानी थी वो नहीं? English grammar clause विषय है. तो clause को ले हम समझते जानी थी वो. What is a clause? A clause is nothing but it's a part of sentence, or it's a part of long sentence. Clauses are of different type, like noun clause, adjective clause, etc. Yes or no? So जेतले clause रो कथा आसे, clause जेतले आसे पिले कोन? adverb clause, adjective clause, noun clause. These are the three main clause in sentence. कोन? noun clause, adjective clause, adverb clause. तो यही relative pronoun टा normally हमको कोठी देखिबा को मिले. relative clause जहारो अन्य ना होची adjective clause. You cannot form a relative clause or an adjective clause. मन रखिबा. relative clause कहले adjective clause, adjective clause कहले relative clause. एतरे कंफ्यूज होवर नाही. तो तमे गोटे adjective clause किंबा relative clause तैयारी करी पारिबो नाही without the help of relative pronoun. तुमको भी लागो सारा एते कहंदो नहीं, सीधा टॉपिक ऊपर को सीधा जीवा बिले. जेमिति फॉर एग्जांपल, so the man whom I saw at the market is blind. Look at this. The man whom I saw at the market is blind. The man whom I saw at the market is blind. Look at this. Now, this whom, can you tell me what is it? And this
whom I saw at the market. This is a which type of clause? Eti clause ର କଥା ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍ ପଢ଼ିବା ବିଲେ ପଢ଼ିବା ଡୋଣ୍ଟ वरी ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଆଜି ଯଦି ୱାର୍ଡ ସରି ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍କୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଗଲେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ସରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ ଓକେ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଦ ମେନ୍ whom I saw এই মেনটা পিলে এই মেনটাକୁ antecedent কহନ୍ତି মনে রাখিবা antecedent it is called antecedent okay so the noun before the relative pronoun the noun before the relative pronoun is called its antecedent. Did you get my points? So the noun before the relative pronoun is called its antecedent. 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 बुझेला तो यही हुमटा होची कौन हुमटा होची योर रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन अच्छी whom which that whose who whom which that whose who normally these words and what also can be used what so whom which that whose whom these are your relative pronoun and they normally start relative pronoun normally start a relative clause. Getting me? So these are what? Pro bro subrot, congratulations beta. God bless you. Congratulations. Lord, many more congratulations from the bottom of my heart. So eta thila kono bile? These are your relative pronoun. एमन को हम कहबा relative pronoun. समय नहीं. ଯେତେ ସମୟ ଅଛି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କମ କମ ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲା ରିଲେଟିଭ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପାଖକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ REFLEXIV ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ସୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପିଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ reflexive pronoun reflexive as you know if you will stand in front of mirror and you will see yourself then what will happen jodi darpon samna re thia habo au tome darpon ku dekhibo what you will see kon dekhibo you will see your reflection tome tomoro chobi dekhi paribo tomoro prati chobi dekhi paribo yes or no so the same thing is applied here also. Getting me? Same thing is applied here. So when the subject reflects, the pronoun reflects the subject, that's called reflexive pronoun. The other name of reflexive pronoun is also compound pronoun. The other name of compound pronoun is also self-added pronoun. Clear? So this noun, how to recognize this noun? The question arises now: how to recognize this pronoun? So simple, so easy. When self is added with a noun, that is called reflexive pronoun. Self type pronouns are called reflexive pronoun. For example, उदाहरण स्वरूप देखिए पहले जेमती एठी हला हमर myself कोन myself yourself then their self himself herself self look at the self getting me these are what these are your reflexive pronoun ए मानू को कौन कहा जाए reflexive pronoun कहा जाए बुझेला self added आउ कौन कहा जाए compound pronoun भी कहा जाए आउ कौन कहा जाए रेसिप्रोकल भी कहा जाए आउ कौन कहा जाए एम्फैटिक भी कहा जाए ना बिल्कुल कहा जाए नहीं तो वर्तमान देखिए पिले एई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दुई भाग रे विभक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केते भाग रे विभक्त दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स वन इज reciprocal and another is your emphatic EMPHATIC look at this प्रथम गोटे है रेसिप्रोकाल आ गोटे है एम्फाटिक तो अकॉर्डिंग टू द यूज
according to the use of reflexive pronoun, these reflexive pronouns are divided into two category. दुईटा भाग रे विभक्त. कौन कौन? गोटे होची रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गोटे होची एम्फाटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वर्तमान सर रेसिप्रोकल कौन और एम्फाटिक कौन प्रश्न उठुची. तो ये सो सिंपल सो इजी. मु तुमको दुईटा उदाहरण दूची तुम स्पष्ट हो मन रखा. आग मुझे ओडिया कही दूसरी तुमको जिते बड़े यही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउनटा सब्जेक्ट पर पर आम व्यवहार कर इमिडिएटली व्हेन वी यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इमिडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट. मन रख व्हेन वी यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इमिडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट that is called your emphatic reflexive pronoun. Then when we use this what reflexive pronoun after the verb when you use reflexive pronoun after the verb, that is called your reciprocal. Yes. So emphatic and reciprocal. For example, I myself can do this. Then I can do this myself. Same question, same sentence but written differently. समान वाक्य अलग हिसाब रे लिखाई. गेटिंग मी? दुईटा कौन समान वाक्य ताकू मु केवल अलग पैटर्न रे लिखी. कौन ये लिखी आई माई सेल्फ कैन डू दिस. मु यह निजे करी परिबी. आउ आई कैन डू दिस माई सेल्फ मु यह निजे करी परिबी. समान जिनस बट आई हैव चेंज द लोकेशन ऑफ व्हाट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये आई माई सेल्फ यहाँ हूँ एम्फाटिक. एम्फाटिक कहले गुरुत्व दवा कौन से जिन जमी आई डू गो ये डूटा लगे गो आगु ये कौन या कहुए एम्फाटिक यूज ऑफ डू. से भाया जिते बड़े यही प्रोनाउन को आम सब्जेक्ट इमिडिएटली विल यूज इमिडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट या कहुआ एम्फाटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तापर आई कैन डू दिस माई सेल्फ ये होगला रेसिप्रोकाल. कौन पिले रेसिप्रोकाल मन रहा. तो जिते बड़े ऑब्जेक्ट पार्ट रे हम व्यवहार कर रेसिप्रोकाल आ सब्जेक्ट सांगे जो व्यवहार कर एम्फाटिक. तो ये थिला पिले तुमर कोडा रिफ्लेक्सिव. वर्तमान जीवा डेमोन्स्ट्रेटिव पाखकू. डेमोन्स्ट्रेटिव demonstrative pronoun. Pile mon rakhiba demonstrative. So the pronouns that are used to demonstrate are called demonstrative pronoun. जो pronoun गुडी को demonstrate बा प्रदर्शन करिबा पाई बा. जेमति मु तुमको टिक्या गुर कहतली this is chalk, this is a piece of chalk, this is a duster, then this is a watch, then this is a bucket, this is a goggles, yeah, like this. So you can say. So what did I use here? I use the demonstrative pronoun this. Getting me? So एटी रहा पिले केतोटी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छी दिस दैट दिज दोज सच मन रखा. सो दिस दैट दिज दोज सच. These five are considered as demonstrative pronoun. What are those? This, that, these, those and such. पहले ए भीतर भी ए demonstrative pronoun भी demonstrative adjective हिसाब रे व्यवहार हुए मन रखिबा. So don't be confused. For example, से दिपाई गोटे example दोची जेमते हला these bottles are brittle. These bottles are brittle and these are bottles. These are bottles. Now can you identify? So
first these and second these. What is the difference? प्रथम वाक्य में लिखिली these bottles are beetle. Then द्वितीय वाक्य लिखिली मु these are bottles. Now anybody can identify this that particular this and this particular this. ए दुईटा दिस भितर डिफरेंस कौन पिले किए कहि परिबो? एनीबॉडी कैन टेल मी? If anyone can comment, I can wait for 30 seconds. Within 30 seconds, I want to see your comment. Okay, let me tell you then. So these are battles. Here, what happens? This is the subject of the sentence. But here, these battles are battle. Here, this is the pre-modifiers of the noun phrase, these battles. It was a noun phrase. Away these kona pre-modifiers, and I have told you all pre-modifiers are adjective. Yes or no? So here this is adjective. Now the turn comes to unveil the myth about demonstrative adjective. So this is your demonstrative adjective and this is your demonstrative pronoun. Simple. Clear? तो ये these battles आगु these लगी एटा कौन एटा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आउ ये दिसटा सब्जेक्ट हिसाब से व्यवहार है सिंगल लगी तो यहाँ हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सरीगला जीवा आगु को गले आम पाइबा कौन पिले distributive pronoun. Distributive pronouns are called what are the distributive pronouns? The pronoun that shows distribution, that tells us about distributing things and that we use to distribute anything else, etc. These are called distributive pronouns. So in English, guys, remember one thing: if you are splitting the definition, if you are splitting the words, we are getting the answer. Simple funda is there. English is nothing but it's all about splitting. If anybody will ask me what is English, English is nothing but it is all about splitting, and especially English grammar when we talk about English grammar. Getting me, guys? So what happens then? So what was that? It was distributive. distributive. Distributive pronouns सब कौन देखो either, neither. Look at this. These are normally considered as what? Distributive pronoun. ताको हमें कौन कहूँ either, neither. There is no either, there is no neither. I नहीं कि नहीं. So these are what? Either and neither. The exact pronunciation of these two words, either and neither. What? Either and neither. Not either, not neither. So what are you telling? So these two words are what considered as distributive pronoun because they show the distribution of things that are being distributed. Like either of the boys means दुई जन के भितर either of the boy, neither of the boy दुई जन के भितर किए नुह either और neither ये दुईटा जिनस आम दुई जन के व्यवहार करता मन रखा between either, neither. These three words normally used for two persons. So because they are used for distribution, that's why they are called distributive pronoun. Okay. Let's go to indefinite pronoun. Why? मु कहीं जल्दी सारूँ तुम जानते समय पाखे आसला आज गोटे घंटा क्लास सरीबा परे केवल प्रोनाउनटा सरी ना पर्यंत सो तापर आइला पिले कौन यस indefinite. तो indefinite pronoun simple. Indefinite कहले कौन पिले indefinite कहले हम जानथुवा not definite stand for indefinite. What is it? Not definite stand for indefinite. So not definite माने तमे जते बेले जानी न गोटे लोक विषय जानी न बट तमे गोटे pronoun व्यवहार करूचो. You don't know about the people about whom you are talking, but still you are using a pronoun. That type of pronouns are called indefinite pronoun. Getting me? Like someone, somebody, anyone, anybody. बुझे ना someone, somebody, anyone, anybody. अब कौन होची? Someone else, anyone else, somebody else. So these are what? Indefinite. That means you are not talking about a certain person. कौन कौन? ଆଉ ତ ଲେଖି ଦେଉଛି ମୁଁ someone, somebody, anyone,
anybody, etc etc. These are what? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? That is called your, yes, you are correct. This is called, yeah, indefinite pronoun. Clear? Indefinite pronoun. Now let us go ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ। ଏଟା ଥିଲା indefinite। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୋଉଠି କି? interrogative। interrogative, interrogative। ଏଇଥିରେ ବି ପିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ twist ଅଛି। interrogative pronoun ରେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ twist ଅଛି। there is a little twist. So interrogative pronouns are also those pronouns. Interrogative pronouns are those pronouns that say use WH words. Simple. Interrogative words stand for WH words. You might have known it. ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ interrogative words stand for WH words. WH words ମାନଙ୍କୁ interrogative words ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି what, whom, where, when, how, etc etc. These are what? WH words. এই WH words মানে ଯେତେ when these WH words use in place of subject ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି single, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ interrogative pronoun. Which is your book? Let's go for another example. Which is your book? And which book is yours? Look at this. Now which is your book? Here which is what happens? I have used which before shabda verb पूर्व मु which टा व्यवहार करछि ताले एई which टा होछि कोन interrogative pronoun. But here I have used which as pre-modifiers in the noun phrase. Which book रो pre-modifiers हिसाब रे which टा को व्यवहार करछि. book टा होछि noun पूर्व मु व्यवहार करछि ताले which टा कोन? This is your adjective. You are correct. This is what? This is your adjective. Which type of adjective is it? Eta hoछि, yes, कौन? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. यू आर करेक्ट. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो पिले आज एतिकी आउ सेमती भी मु तो मानक कही क्लास करी कमिटमेंट थिला मोर मु क्लास कली आउ जदि बेसी समय क्लास करी थ्रोट पुणी खराब हम तेणु आसंता काली ठीक 11टा बेले पुणी थोड़े क्लास जॉइन करवा गला जी ठीक हो जाऊथबो टाइम ड्यूरेशन से बढ़ी बढ़ी जाऊथबो डाटा रखिबा. ठीक अच्छे. सी यू टुमोरो. सब पिला कहि पुणी थे क्लासटा को शेयर करदे पिले शेयर करदे ग्रुप रे निज सांग मान सहित शेयर करदे आ क्लास जॉइन करने 3 दिन क्लास अच्छी 3 दिन भितर मैक्सिमम जिनस आम सारिबा. आज राति भी 8 ରୁ 9ଟା ग्रामर क्लास हम सेकेंड ईयर पिला. सी यू देयर. बाय.